Students, welcome to RK Institute. Today in this video lecture, we are going to discuss multiple choice question answers from the chapter The Best Christmas Present in the World from CBSE Class 8 English book. So without wasting the time, let us start today's class. Question number 1. The narrator bought the desk from a junk shop because नैरेटर ने एक जंक शॉप से डेस्क खरीदा, उसका क्या कारण था? देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर. ऑब्वियसली आई विल टेल यू द आंसर ऑल्सो. ऑप्शन ए, सच ए डेस्क वॉज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स, क्योंकि उस तरह का डेस्क कहीं और उपलब्ध नहीं था. ऑप्शन बी, द ऑथर वांटेड एन एंशिएंट रोल टॉप डेस्क, लेखक को एक पुराना रोल टॉप डेस्क चाहिए था. ऑप्शन सी, इट्स रोल टॉप वाज इन सेवरल पीसेस, क्योंकि उस डेस्क का ऊपरी हिस्सा कई टुकड़ों में टूट चुका था. ऑप्शन डी, द नरेटर कुड नॉट अफोर्ड अ न्यू रोल टॉप डेस्क, लेखक एक नया रोल टॉप डेस्क नहीं खरीद सकते थे. व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी, yes, the right answer will be option D. The right answer is option D. The narrator could not afford a new roll top desk. Okay, let us move to question number 2. I began work on it on Christmas Eve. In the above sentence, it stands for. यहाँ जो लाइन दिया गया है I began work on it on Christmas Eve, इस पंक्ति में, इस लाइन में it किसके लिए यूज किया गया है? द ऑप्शंस आर ए जंक शॉप, ऑप्शन बी द गार्बेज, ऑप्शन सी द रोल टॉप डेस्क और द ऑप्शन डी द ड्रॉवर. तो यहाँ पे क्या होगा? द करेक्ट आंसर, यस, द करेक्ट आंसर इज द रोल टॉप डेस्क. लेखक ने उस रोल टॉप डेस्क पे काम करना शुरू किया क्वेश्चन ईव, क्रिसमस ईव को. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, द रोल टॉप डेस्क. ओके, let us move to question number 3. Question number 3 is, the narrator found a shallow space below a secret drawer when he एक secret drawer के नीचे एक shallow space मिलता है लेखक को. कब? the option is when he pulled out first drawer को खींचने के बाद. option B, began to mend the desk. ऑप्शन सी, पुल्ड आउट द लास्ट ड्रॉवर, और ऑप्शन डी, हैड फिनिश्ड वर्किंग. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज, yes, you can guess also what is the correct answer here. Yes, the correct answer is when the narrator pulled out the last drawer, means option C is the right answer. Option C is the right answer. So let us move to question number 4. Question number 4. January 25, 1915 was the date on which 25th January 1915 को क्या हुआ था? The options are the narrator pulled out the drawer. Option B, Jim's letter came to Connie. Option C, Jim wrote the letter. Or option D, Jim met Hans Wolf. So again you may guess the right answer. Yes, obviously I will tell you the right answer, but you have chance to guess it again. Okay, the right answer is Jim's letter came to Connie. This means option B is the right answer. Option B, not C. Option B is the right answer. Okay, so let us move to next question, that is question number 5. According to Jim, a Christmas morning should be. According to Jim, a Christmas morning should be. Jim के अनुसार क्रिसमस की सुबह कैसी होनी चाहिए? The options are a cold and frosty. Option B, warm and comfortable. Option C, beautiful with the sun shining. Or option D, raining. What type of a Christmas morning should be according to Jim? So here the right answer is option A, cold and frosty. ठीक है, जिम के अनुसार क्या होना चाहिए? एक क्रिसमस मॉर्निंग को कोल्ड एंड फ्रोस्टी
होना चाहिए. We have read this in the story. Okay, now move to question number 6. Question number 6 is, but the truth I am ashamed to say is that fridge began it. In the above sentence, fridge refers to. Again, a line from the story is given here, and the question is, in the above sentence, fridge refers to. Fridge किन्हें कहा गया है, किनके लिए फ्रिज शब्द का यूज किया गया है? तो द करेक्ट आंसर, द जर्मन सोल्जर. फ्रिज वर्ड इज यूज्ड फॉर द German soldier. This means option A is the correct answer. Okay, the German soldiers are called fridge. So let us move to next question. Question number 7. The Christmas celebrations were initiated by. Christmas celebration को किन्होंने शुरुआत किया था, किसने शुरू किया था? इस according to this story. Okay, don't move anywhere else. All the questions are based on the story you have read, so answer only according to the story. The Christmas celebration were initiated by option A, the British, option B, the Germans, option C, both of the above, and option D, chance. So the correct answer is option B, the Germans. Yes, the Germans initiated Christmas here. Okay, let us move to next question, that is question number 8. Jim's first reaction to the Happy Christmas by the Germans was one of. When one of the German soldier first shouted Happy Christmas, है ना? How it appears to Jim? Obviously, it was a surprise, है ना? But I am giving you some some options here. Suspicion, B, surprise, C, anger, or D, disgust. Yes, the correct answer will be surprise. Option B is the right answer for this question. Option B, surprise. Okay, let us move to next question, that is question number 9. Snaps is, है ना, हमने स्टोरी में पढ़ा snaps. What is snaps? Snaps is option A, a kind of meat. Option B, a German wine. Option C, a sauce, or option D, a British dish. Okay, you may guess the answer. I know most of you know the answer. Snaps is, yes, option B is the right answer, a German wine. Option B is the correct answer, a German wine. Okay, let us move to next question, that is question number 10. Okay, now again some similar question is there. Sausage is, what is sausage? Sausage is, four options are given there. A wine, option B, slice of meat and bread, or option C, a sauce, or option D, a British dish. So the correct answer is sausage is a slice of meat and bread. This means option B is the right answer. Option B is the right answer, slice of meat and bread. Hope you all are understanding. You may also pause the video and note it down in your note copy. Okay, let us move to question number 11. What was the speaker's reaction when he realizes? जब speaker realize करता है the initiative of the German soldiers, how did he feel? Option A, he was ashamed, वह शर्मिंदा था. Option B, he gets very angry, वह बहुत गुस्सा होता है. Option C, he was embarrassed. या option D, he began to cry. Okay, let me suggest what will be the correct answer. Okay, I am telling you the answer. He was ashamed. Option A is the right answer. Option A is the right answer. He was ashamed. Okay, let us move to the next question, that is question number 12. Why did she become happy? वह खुश हो गई, क्यों? Because it was Christmas. Option B, at the sight of the visitor को देखकर. या option C, because the matron had served apple pie, or option D, on seeing the decoration and the Christmas tree. So the correct answer for this question is at the sight of the visitor. Option B is the right answer. Option B is the
right answer for this question at the site of the visitor. Okay, let us move 13. Who did she think had come? सी, यहाँ पे सी का मतलब कौनी है. कौनी किसे समझती है कि कौन आया है? ऑप्शन ए जिम, बी हैंसुल्फ, ऑप्शन सी हर फादर, ऑप्शन डी हर ब्रदर. क्या समझती है वह कि कौन आया है? यस, सी थॉट जिम हैड कम मीन्स क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट, जिम. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. ऑन व्हिच डेट डज कोनी रिसीव जिम्स लेटर? नीचे दिए हुए डेट में से किस डेट को कोनी जिम का लेटर रिसीव करती है? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1914, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1945 और ऑप्शन डी 25 जनवरी 1915. सो एज वी नो, Coney received the letter on 25th January 1915. So option D is the right answer for this question. Option D, 25th January 1915. Okay, now move to the next question, that is question number 15. What is the best Christmas present in the world? According to this story, what is the best Christmas present in the world? Option A, Jim's letter, option B, Jim's return, option C, Jim's present, or option D, Jim's picture. Yes, dear student, guess the answer. According to the story, the best Christmas present in the world is Jim's return. Jim's return. The correct answer is option B, Jim's return. Many students have doubt that Jim has not come back. Then how Jim's return will be the correct answer? But I will inform you that Coney thought the visitor that he is Jim. So Jim's return will be the right answer for this question. Hope you all have understood everything. Okay, next move to the next question, that is question number 16. By which Christmas did Jim promise to be back home? किस साल के क्रिसमस तक जिम घर वापस लौट आने का प्रॉमिस करता है अपने लेटर में? 1913, 1914, 1915, 1916. ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1916. द करेक्ट आंसर इज 1915, क्योंकि 26 दिसंबर 1914 को वह लेटर लिखता है. 26 दिसंबर 1914 को, और 25 जनवरी 1915 को कोनी लेटर रिसीव करती है. इसका मतलब 1915 के क्रिसमस में जिम वापस आएगा या प्रॉमिस करता है. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. डज कोनी वेट फॉर हर हस्बैंड कम टू एन एंड? क्या कोनी का अपने हस्बैंड का इंतजार कभी खत्म होता है? तो इसको हम लोग नन ऑफ द अबव करेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसे लगता है कि जो विजिटर आया है वह कौन है? उसका हस्बैंड है, लेकिन वह एक्चुअल में तो उसका हस्बैंड नहीं था. सो हम लोग कहेंगे नन ऑफ दिस. ओके, सो वी मस्ट आंसर दिस नन ऑफ द अबव. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is it was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. This line is from the story, and on the basis of this line, here are some questions. The speaker of these lines is, इस लाइन्स के स्पीकर कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन. द नरेटर, ऑप्शन बी द ऑथर, ऑप्शन सी जिम और ऑप्शन डी कोनी. ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए, द नरेटर. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. द ईट इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू. सेंटेंस में जो ईट है वह किसके लिए यूज किया गया है?
So the correct answer, the options are there: a country, option B a chair, option C a desk, or option D a letter. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी अ डेस्क. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20. द टेम्पटेशन टू बाई इट वाज. ऐसी कौन सी विशेषता थी उस रोल टॉप डेस्क में जो नैरेटर को खरीदने के लिए उकसाता है? ऑप्शन ए अ रिस्क, ए चैलेंज, द क्वालिटी, द चीप रेट. तो ऑब्वियसली the cause of temptation was the cheap price. So the correct answer will be option D, the cheap price. Okay, today this much only. Hope you all are benefited from this video. Like and subscribe the channel and drop your queries in the comment box. Thank you very much.